Okay, hi everyone. So my name is Mayur Upadhyay and I am your mentor for CUET. And जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी टॉपर्स की सीरीज चला रहे हैं वो बच्चे जिन्होंने CUT 2022 में टॉप किया है, ठीक है. Since in CUT we don't have this concept of AIR, All India Rank का concept नहीं है. Everything is driven by percentile, ठीक है. Everything is driven by marks. So in today's interview, we have with us Shreya Bansal, who has scored fantastically, and from 800, she has got 792 marks. So let's meet Shreya and let's welcome Shreya. And Shreya से उसके जो भी राज हैं उसके इतने अच्छे मार्क्स आने के, उसके इतने अच्छा स्कोर करने के, उन सारी चीजों पे हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करने की, उससे श्रेया से सारी चीजों को समझने की हम यहाँ पे आज कोशिश करेंगे, ठीक है. सो हाय श्रेया, वेलकम. Thank you, sir. Thank you. Okay, so Shreya, firstly tell me about yourself. Like आप किस स्कूल से बिलोंग करते हो, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, एंड आपके 12th में आपका डोमेन क्या रहा था, आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे थे? Right. Sir, I am from Haryana, Patiabad, a small town in Haryana, and I've done my schooling from a residential school in Himachal Pradesh, Pinecrest School. Okay. And in my 11th, 12th, I had humanities as my stream, in which my subjects were political science, sociology, psychology, economics, and English. Okay, श्रेया. So आप भी बाकी बच्चों की तरह अपने 12th पे फोकस कर रहे होंगे कि 12th पे पूरा फोकस करते हैं, एंड उसके बाद 12th में जो भी आपके परसेंटेज आएंगे उन परसेंटेज के बेसिस पे आपको किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है. अपनी पसंद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना पसंद का कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा. I want to ask you when you came to know about this examination CUET, and when you started your preparation for CUET for the very first time. Sir, we got to know about CUET during our boards exam. So that time I was focusing more on my boards, and I asked my teacher that what should be my strategy for handling both boards and CUET simultaneously. So they said that focus on boards right now. Because whatever you'll be covering for your board examination, same will come in your CUET exam. So I was focusing on my boards, and once my boards got over, I started focusing on the syllabus which was not there in boards, but it was coming in CUET exam. So in that 1 month of prep time between my boards and my exam, I was focusing more on the left out portion, and simultaneously I revised the previous portion as well. Okay, and when was your exam, बच्चे? Not particular date, but एक थोड़ा सा भी आपको अगर टाइम फ्रेम याद हो. My first CUET exam was on 15th July. It was sociology. And my second exam of CUET, all the leftover 3 exams were on 5th August. So between my last board and my CUET exam, there was almost a time period of 1 month. Okay, तो अच्छा आपको थोड़ा सा अपना सारी चीजों को रिवाइज करने का, एंड फर्स्ट एग्जाम्स की टीचिंग्स को लेके सेकंड एग्जाम में जाना, उन सबका मौका आपको अच्छा मिल गया था यहाँ पे. Right. Okay. So Shreya, my second question will be कि from which stream you are, ठीक है, आपकी स्ट्रीम क्या रही है, एंड आपने CUET में कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स चूज किए थे? My stream in 11th 12th was humanities, and for my CUET exam, I chose psychology, sociology, and political science, along with English in the languages. Okay, English language. अच्छा, आपका कोई पर्टिकुलर कॉलेज, आपका कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो आपको थोड़ा सा शुरू से ही फैसिनेट कर रहा हो कि नहीं मुझे तो यहीं पे जाना है, या फिर मैं जो प्रिपेयर करूंगी वो सिर्फ इसी के लिए प्रिपेयर करूंगी? Sir, from the beginning, like if we talk about DU was one of my first preference, and in DU, colleges like LSR, Lady Shri Ram, and Miranda House were one of the dream colleges. So the dream colleges, मतलब the top notch, मतलब जो 99.9% बच्चों के जो ड्रीम कॉलेजेस होते हैं वो आपके ड्रीम कॉलेज थे, एंड यू आर अबाउट टू फेच योर ड्रीम, आप अपना ड्रीम फेच करने वाले. Hopefully. Okay. I don't think so कि आपके मार्क्स के, मतलब जितने आपके मार्क्स हैं उन मार्क्स पे कोई भी इशू होगा या फिर आपको एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक इट विल बी अ स्मूथ राइड, अच्छे से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है. बट फिर भी फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट. Right. Okay. So now Shreya,
जो बच्चे यहाँ पे जानना चाहते हैं कि व्हाट्स योर स्कोर इन सीयूटी, ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका Uh, स्कोर क्या है? right. Sir, in my sociology, psychology, and political science, I scored 100% percentile, that is 200 marks. That's And wonderful. For English, I scored 192 out of 200. Okay, so guys, listen. Psychology 200 out of 200. Sociology 200 out of 200. And what is your third domain, Vache? Political science. पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, अगेन 200 आउट ऑफ 200। ठीक है, तो तीनों डोमेन में 200 आउट ऑफ 200, 100% मार्क्स आए हैं यहाँ पे श्रेया के। ठीक है, सो राउंड ऑफ लॉस फॉर यू बच्चे, राउंड ऑफ लॉस। सो बस इंग्लिश में आपका थोड़े से मार्क्स यहाँ पे कम हो गए ना, आई थिंक दो क्वेश्चन गलत हो गए होंगे आपके। Answer key के according when I checked, it was one question. Okay. But because of normalized. ओके, सो बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे जो आपका वो था स्कोर था वो 192 पे चला गया। ओके ओके, श्रेया अगेन, सो ये चीज हम, मैं ये वाला क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछ चुका हूं, बट अगेन आपके कोर्सेज, योर कोर्स, आपका प्रेफरेंस का कोर्स क्या था यहाँ पे, एंड व्हाट इज योर प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी? आपने एक लिस्ट सेट की होगी, ऑफ कोर्स आपका डीयू आपने पहले ही बता दिया है कि डीयू वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, बट आपने एक प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनाई होगी, उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे थे? So my preference for course for Delhi University is BA Pol Science Honors. Okay. And the colleges are Miranda, Lady Shri Ram, Gargi, and the Jesus and Mary College. Okay. These are the top 5 choice for me. ओके, तो डीयू के अलावा आपने और कोई यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्ट किया था, या फिर आपने किसी और यूनिवर्सिटी का नाम भी वहां पे डाला था जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे? No, sir. Only I just opted for Delhi University. Okay, because it was for just BA in Delhi. Yes, sir. For BA in Delhi University, there were a lot of courses and colleges, and they are reserved for women. Most of the colleges. Absolutely. So I applied just for Delhi University. ग्रेट ग्रेट बच्चे, ग्रेट। ओके, सो यहाँ पे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चे कि हाउ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। लाइक आप 12th में अपनी सारी चीजें प्रिपेयर कर रहे थे, बट फिर भी 12th की प्रिपरेशन करना और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि हाउ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ योर डोमेन सब्जेक्ट्स, एंड कैसे यहाँ पे सुपरग्रैड्स जहां पे आपने आए थे, आपने एनरोल किया था, सो हाउ सुपरग्रैड प्ले दिस रोल? आपकी मेंटरिंग का या फिर आपको पढ़ाने का रोल यहाँ पे सुपरग्रैड्स ने कैसे प्ले किया था? राइट सर। Sir, I started my preparation from the day my boards got finished. So first I covered the portion which I didn't do in my boards, the syllabus which was not there for the boards. And after that, I revised the portion which I had already studied. And for the revision, I focused more on details because it is an MCQ exam, so we have to focus on details. And then after I had revised all the syllabus, I focused on testing myself, and for that I enrolled myself into SuperGrads mock test series. And in that series, I took like 20 mock tests, which played a very important role because the exam was through a CBT mode. And I had not given a lot of exams through that mode. So SuperGrad gave me this experience of CBT mode in advance. Okay, that's wonderful, Bacha. That's wonderful. Again, my next question would be कि आप अभी तक आपने जो भी प्रिपरेशन की होगी, आई डोंट थिंक सो आपने अभी तक किसी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, लाइक आपका 10th बोर्ड हो गया, 11th हो गया एंड 12th हो गया, ऑल दीज एग्जामिनेशंस दे वर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, एंड इसके बाद एक पूरा सडन चेंज यहाँ पे फ्रॉम सब्जेक्टिव टू एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन टू एन एग्जामिनेशन व्हिच कंटेन्स लॉट ऑफ एमसीक्यूज, एंड जहां पे आपको क्वेश्चन पूछा गया एंड क्वेश्चन के बाद 4 सवाल दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए गए, एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस सीम्स वेरी इजी, लगता बहुत इजी है कि नहीं नहीं ये तो अब बहुत आसानी से हो जाएगा, आंसर हमारे सामने ही होगा, 4 ऑप्शंस होंगे तो हमें जस्ट वी हैव टू पिक द करेक्ट आंसर, बट आई थिंक इट्स द टफेस्ट examination which anyone can crack.
ये पूरी प्रिपरेशन, ये सब्जेक्टिव से लेके ऑब्जेक्टिव की आपने जो पूरी जर्नी थी, इसको आपने कैसे तय किया, एंड हाउ यू अप्रोच फॉर दिस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन? व्हाट वाज योर अप्रोच Right. फॉर दिस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन? Right, sir. Sir, in our boards, so this year for the CBSE student, there were two boards. One was objective and one was subjective. So the objective board of December, it gave me a small experience of how to handle MCQ exams. Okay. So that technique I followed even in the CUET preparation. ठीक So है. whenever there is a MCQ exam, we already have answer in front of us. It just requires a proper approach to go to the right answer for Okay. that particular question. So ठीक when है. you're preparing, just what I did was I focused on details and I made sure that my concepts were clear so that I'm able to get to the answer even if I'm able to eliminate two options. So I used the elimination techniques for the answers, and also the shift from subjective to objective just requires focusing on a little bit of details and concepts. So that way students can handle it easily. Okay, but again, I think you are being modest here कि एलिमिनेशन मेथड से, या फिर ये जो आप अपनी जो बता रहे हो, आई थिंक इससे कोई भी 100% मार्क्स लेकर नहीं आ सकता, ठीक है? इट्स ऑल योर हार्ड वर्क, ठीक है? तो एलिमिनेशन मेथड, यस, हाँ, ठीक है कि आपने 80% क्वेश्चन जो है उन्हें सॉल्व कर लिया है, एंड द रिमेनिंग 20% क्वेश्चन वहां पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा के या फिर कुछ एक दो तुक्के लगा के, बट उसमें भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है? बट सिंस यू हैव गॉट दी 100% मार्क्स, तो आई थिंक यू आर बीइंग मॉडेस्ट, आप थोड़ा सा यहाँ पे मॉडेस्ट हो रहे हो. Okay, okay, sure. Okay, so my next question would be कि आपने पहला एग्जामिनेशन दे लिया, आपने 2022 जब सीयूटी का इंसेप्शन हुआ, जब सीयूटी सबसे पहली बार कंडक्ट हुआ, तो आपने वो एग्जाम दिया एंड यू बिकेम द टॉपर. आपके डोमेन में 600 आउट ऑफ 600 मार्क्स आए यहाँ पे, ठीक है? नाउ सीयूटी 2023 इज अप्रोचिंग, ठीक है? बहुत जल्द यहाँ पे सीयूटी 2023 के लिए तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी, बच्चे जो हैं वो उसकी प्रिपरेशन के लिए लग जाएंगे. सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू दोस किड्स, टू दोस स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी 2023, या फिर दोस हु विल बी प्रिपेयर फॉर सीयूटी इन फ्यूचर? उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो बच्चे? Sir, my only advice to all these kids will be appearing is that go through the syllabus first, and then just make sure that when you're preparing for the exams, you focus on details, you clear out your concepts, and make sure that you take a lot of practice. Because sometimes what Just a second, sure. I think there is some issue again. Please, आप अपना एक बार कनेक्शन चेक कर लेना. Yeah, all good, all good. अभी ठीक है. fine. Yeah, अभी ठीक है. हाँ. Connection. हाँ, नहीं नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है. Yes, please continue, बच्चे. Yes, sir. Yes, sir. So, sir, yes, I was telling that what generally students do is that they don't practice a lot when they are preparing for some competitive exam. So the only advice is that once you are prepared, make sure that you take a lot of practice. And now we have a lot of places like SuperGrads, which offers you these mock test series and all India tests. So just enroll yourself and get a practice of CBT mode in advance, because it's a little tricky to handle. Absolutely. Exam on computer and exam on papers. They are two different things. So a practice of CBT, focusing on details and a little bit of time management will be helpful. Okay, Shreya. So thank you, Shreya. Thank you so much for giving these advice to your juniors, जो कि आपको upcoming years में आपको join करेंगे, and of course you will be their seniors. So I hope finger cross कि आपको अपने पसंद का कॉलेज मिल जाए, LSR हो चाहे वो मिरांडा हो, so दोनों में से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाए, एंड आप वहां पे जो भी आप डिग्री परस्यू करना चाहते हो आप वो परस्यू कर सको. Okay, Shreya. So thank you so much, Bache, for giving us this interview and for sharing your bit of knowledge with all the students of 2023 and with all of us. So again, जब ये इंटरव्यू आगे जाके जब बच्चे देखेंगे तो आई थिंक उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, उनको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी इससे.
सो थैंक यू श्रेया, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा श्रेया से, जो कि बहुत जल्द जाने वाली है डीयू के अपने पसंदीदा कॉलेज में। एंड 23 किड्स, 24 किड्स, श्रेया आपकी वहां पे सीनियर होगी। सो प्लीज इस इंटरव्यू से उसे पहचान देना एंड मिलना उससे जाके, ठीक है? ओके गाइस, सो ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस इंटरव्यू। बाय बाय, टेक केयर, एंड हम जल्दी मिलेंगे फिर किसी वीडियोस में, फिर किसी इंटरव्यू में, जहां पे हम किसी और बच्चे के साथ उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही है उस पर बात करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।